उज़्बेकिस्तान, द ज्यूल इन द हार्ट ऑफ द सिल्क रोड। जब मुझे पता लगा कि 90K की रिटर्न टिकट्स मिल रही हैं लाहौर से, मैं तो बैग्स पैक करके निकल गई। लेकिन इस कंट्री ने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड की। हमारे 10 दिनों में वी विटनेस द मैजेस्टिक रेनोवेटेड सिटीज, द कलरफुल प्रिंट्स एंड द डिलीशियस फूड। ऐसा लग रहा था आई वाज ट्रांसपोर्टेड 2500 साल पुराना टू द डेज ऑफ द मुस्लिम गोल्डन एज। द बेस्ट पार्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल countries in the world, and you can easily do it in around 2.5 to 3.5 lakh per person. In this vlog, witness the beauty of Uzbekistan through our eyes and learn how to plan your trip too. Hi guys, हम पहुंच चुके हैं खीवा, the oldest historical city in उज़्बेकिस्तान। लाहौर से हमने फ़्लाइट ली थी, लाहौर से सस्ती थी, हमें 90,000 की फ़्लाइट पड़ी थी। फिर ताशकंद पहुँच कर हमने फिर से एक फ़्लाइट ली थी। वैसे ताशकंद तो खीवा एक ट्रेन है जो बहुत अफोर्डेबल होती है 5,000 की, बट वो बहुत जल्दी बुक आउट हो जाती है महीने पहले। सो एंड टाइम पे मुझे फ़्लाइट ही मिली एंड देन वी जस्ट चेक्ड इनटू द होटल एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट डे एक्सप्लोरिंग दिस सिटी। Khiva is by far the most beautiful place in Uzbekistan, लेकिन unfortunately tour companies तो यहाँ लाती ही नहीं। ये 2500 साल पुराना शहर used to be a stop on the Silk Road, and later on it was the capital of the Khiva Khanate who developed its madrasas and mosques. ये एक पूरा wall city है अंदरून समझ लें, which has been converted into hotels, restaurants and bazaars. It is a UNESCO World Heritage Site. The guest house where we stayed was a traditional home जिसकी दीवारें were made of mud and straw, and it was run by a local family. This place is like incredible. मतलब हम चल रहे हैं and हर मोड़ पे ना there's something different and unique to see. वहाँ पे हर चीज़ इतनी aesthetic है. Like look at this cafe, traditional seating, चारपाइयों की टाइप की seatings होती हैं. और ये है हमारे पीछे जुमा mosque, which we are about to enter and show you. Wow. Ticket. So Juma Mosque के लिए टिकट चाहिए and I think कुछ sites के लिए. So we are going to the ticket station to buy the tickets. We bought these tickets and it also has the map. ये 250,000 की टिकट्स आए हैं जो बनते हैं तकरीबन 11,000 पाकिस्तानी रुपए. So one by one, हाँ 250,000 per person. So one by one we're gonna explore all the places on this map. 17 year. तो चलते हैं इस मदरसे में फिर. कुतुब मुराद. Secret chamber. Oh. Careful. ये यार हम ना ये वो है आई थिंक जहाँ पे ये लोग ग्रीनरी स्टोर करते हैं। बाद में बिल्कुल कुछ और था। But I think this is जहाँ पे अपने गंदम रखते हैं। What do you mean you think? That was my idea. Oh, okay, that's what we thought. चलते चलते एक स्क्वायर में आ गए हैं एंड यहाँ पर ट्रेडिशनल उज़्बेक एम्ब्रॉयडरी लगी हुई है एंड इट्स सो प्रीटी. लाइक दिस इज द मिनरेट. और मिनरेट जाने के हमें 200,000 सोम एक्स्ट्रा लगेंगे. ओह गॉड, अब लोगों को लगे मैं ड्रामा कर रही हूँ लेकिन ये बहुत तंग है. खत्म नहीं हुई. We are finally here. हवाएं चल रही हैं. God. Except that we paid. हाँ बहुत फिट है. हवा भी बहुत अच्छी है. For the rest of the day, we explored the remaining places on our ticket, such as the Ayatollah Khan Mosque, some graveyards we came across, and we even bumped into some news reporters and we ended up on Uzbek news. Then we had lunch at a very beautiful yet expensive restaurant. Uzbek food is meat dense and they use a lot of animal fat. लेकिन क्योंकि मैं पेशावर गई हुई और मुझे वहाँ का food की भी आदत है, I really love Uzbek food. We ended the day at a beautiful cafe overlooking the Islam Hoja Minaret and tried some traditional Uzbek sweets. yogur, mantequilla, queso, ¿qué es como? ¿Qué es esto?
Day 2 in Khiva and ये देखें we are doing nashta. This is cheese, jam, fig jam, sour cream, gyaline. हमसा में सो gyaline कहते हैं and naan. So this is our ticket. कल हमने ये half explore किया था and आज we are going to explore this half. And इसकी best part ये है कि ये 2 दिन के लिए valid होता है, so you can आराम से explore. Like आपको tension नहीं होती कि एक दिन में सारी जगह करनी है वरना टिकट दोबारा देना पड़ेगा. So let's go. Wow. So beautiful. What's your take on this place? बहुत खूबसूरत है ना? ये मेरे ख्याल से सबसे प्यारी जगह है। One of the most. Yes. ये और minaret। हाँ, इस्लाम खोजा minaret and this one Toshhovli Palace. ये 2 चीज़ें आपने बिल्कुल skip नहीं करनी when coming here. And here it is. इसके बाद we explored more places such as the 18th century Purana Jumma Mosque, which has 212 beautifully carved wooden pillars, and then we visited a wood carving shop जहाँ पे artisans बना रहे थे खूबसूरत carved wooden boxes, pillars and souvenirs in the ancient art. तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी चल चल के, so हम यहाँ आए कैफ़े खाइफाक में. कॉफ़ी नो, हर जगह ब्लैक कॉफ़ी मिलती है. हमने कॉफ़ी क्रीम मंगवाई, हमने सोचा कि बहुत ही वाइट कॉफ़ी होगी, दूध वाली क्रीमी. उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी में क्रीम डाल के भेज दिया. नाश्ते में भी हमने कॉफ़ी विद मिल्क मंगवाया, इतना सा दूध था उसमें. मुझे उज़्बेकिस्तान में खाना बहुत पसंद आया बिकॉज वो भी पाकिस्तानीज़ की तरह मीट लवर्स हैं. लेकिन एक चीज़ जो हमें पूरे मुल्क में ही मिली was good coffee and tea. We got coffee. I hope this is good. अभी तक अच्छी कॉफ़ी नहीं मिली यहाँ पे. उज़्बेक्स यूजली दूध के बगैर चाय पीते हैं और अगर आप मिल्क टी भी ऑर्डर करें बहुत फीकी और पतली होती है. क्रीम किधर है? I have no idea. I should have packed everyday sachets with me on the trip. Everyday के sachets travel friendly हैं and एक 13 ग्राम sachet से 2 कप चाय बनती है. और जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही होती हूँ मुझे ऐसे ही रंग, खुशबू और जायका वाली चाय की जरूरत होती है. अगर आपको भी नेक्स्ट ट्रिप से पहले everyday sachets खरीदने हैं, you can get them from the link in my bio. Now back to Uzbekistan. Last attraction जो हम खीवा में देखेंगे, this is called the, what's it called? It's a watchtower. And उसके बाद we're going to do dinner at Teresa Cafe, you know, there. And sunset के साथ there's gonna be food and dancing. जी. Okay, can I show you? Oh my god. महंगी नहीं है यहाँ पे prices for being the top most famous restaurant here. मतलब मुनासिब है यार. टेस्ट करके बताओगे क्या? अच्छा है.
अगले दिन सुबह हमने उर्गंज तक टैक्सी कराई एंड वहाँ से बुखारा तक ट्रेन ली. बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन सिस्टम. बट व्हेन वी एंटर्ड द ट्रेन आई रियलाइज्ड कि क्योंकि मैंने इकॉनमी ट्रेन बुक कराई है और वो भी स्लीपर, यहाँ पर एसी नहीं है. फिर भी काफ़ी थी बट ऐसे मसले ट्रैवल में हो जाते हैं. सो वी जस्ट सेटल डाउन टू स्लीप व्हाइल द लैंडस्केप्स रोल बाय एंड सून वी वर इन बुखारा. गुड मॉर्निंग. और हो रही है हल्की हल्की बारिश. हम एक दिन रुके हैं बुखारा में और जिस दिन रुके हैं उस दिन हो गई है बारिश, तो किस्मत अच्छी है. And बारिश में यहाँ की वाइब इज लाइक सो डिफरेंट, लाइक द स्मेल ऑफ द अर्थ एंड द फ्लावर्स. आज हमने सारे पॉइंट्स कवर करने क्योंकि कल हमने ट्रेन लेनी है टू समरकंद. तो लेट्स स्टार्ट द टूर. बुखारा वो शहर है जहाँ इमाम बुखारी पैदा हुए और इसी शहर के बारे में हम कहानियाँ सुनते हैं कि जिसको चंगेज़ खान की मंगोल आर्मी ने तबाह किया, यहाँ तक कि दरिया का रंग खून से लाल हो गया. वो किताबें और इल्म तो शायद कभी वापस ना आए, लेकिन शाइबनी डिनेस्टी ने शहर को रीबिल्ड किया विद मैग्निफिसेंट मॉस्क्स, मदरसास, फोर्ट्स एंड बाजार्स जो आप आज भी देख सकते हैं. हम पहुँचे हैं बोलो हाउस मॉस्क एंड दिस इज एन एक्चुअल फंक्शनिंग मॉस्क. आई थिंक दिस वाज जस्ट द दुआ बिकॉज लाइक इतनी छोटी सी कौन सी नमाज होती है. ये कौन सी नमाज थी? मुझे खुद नहीं पता. जनाजा हो रहा है किसी. ओह भैंस की दुम, जनाजा हो रहा था और लगा इस शख्स को लगा नमाज हो रही है. ये कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त बारिश में. गाइस आई कैन नॉट एक्सप्लेन. समझ के अंदर नमाज पढ़ने में एंड आई एम जस्ट मार्वलिंग एट दिस. So we were like super hungry and हमें एक जगह नजर आई खाने की, तो हम यहाँ आ गए. समझ के ट्रेन में खाना जाएगा तो थोड़ा सा मूड भी बेहतर हो जाएगा. यहाँ पे हर रेस्टोरेंट, हर होटल इतना एस्थेटिक है. I just love it. This is kumquat और ये है meatball soup which looks actually good. It's good. थोड़ा फैटी है बस. लंच के बाद हमने विजिट किया द खूबसूरत पोए कालियान मॉस्क एंड मदरसा. 13th सेंचुरी में चंगेज़ खान की आर्मी ने इसको कम्प्लीटली तबाह किया, लेकिन सरप्राइजिंगली मिनरत को इन्होंने हाथ नहीं लगाया. बाद में शेबानी रूलर्स ने मिनरत से इंस्पिरेशन लेके मॉस्क और मदरसा को दोबारा रीबिल्ड किया. एंड यहीं से 20 मिनट दूर वॉक पर वी ऑल्सो विजिटेड द जिंदान, जहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कैद किया जाता था. शाम के वक्त वी हेडेड टू द 1500 साल पुराना आर्क सिटाडेल, बुखारा का सबसे पुराना और बड़ा स्ट्रक्चर. 1900s में जब सोवियट्स ने बुखारा को अटैक किया, दे बॉम्ब्ड द सिटाडेल डैमेजिंग इट. लेकिन जब उज़्बेकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली 1991 में, गवर्नमेंट ने इसको रिस्टोर किया एंड आज एक म्यूजियम भी है एंड रूफटॉप से आपको हिस्टोरिक वॉल सिटी का बहुत अच्छा व्यू भी मिलता है. The viewpoint, I think we are almost there. ये बड़ा reveal होने लगा है. What do you think the view is going to be like? There it is. So beautiful. But it's not Khiva. गाइस प्रोग्राम तो भर गया. बारिश हो गई है और इतनी ठंड हो गई है आप नहीं घूम सकते इन हालात में. तो जल्दी से एक आखिरी स्पॉट का लॉन मिनट करके फिर we are gonna go back to the hotel. We have reached the famous Charminor. Hey, we are in Samarkand. पाकिस्तानी में स्पेशली एक्साइटेड थी समरकंद देखने के लिए. समरकंद सिर्फ सिल्क रोड्स का हिस्सा नहीं था विच कनेक्टेड द ईस्ट एंड द वेस्ट, बल्कि ये तिमुरलेन द ग्रेट कॉन्करर के एम्पायर का भी कैपिटल. बाबर वाज द मोस्ट डिसेंडेंट एंड बिलीव्ड कि ये शहर उसकी जायदाद है. 3 दफ़ा उसने समरकंद कैप्चर करने की कोशिश की. 3 दफ़ा हारने के बाद ही वेंट साउथ एंड कैप्चर्ड दिल्ली इंस्टेड एंड दैट इज हाउ द मुगल रूल इन द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड. जो हमारा होटल है इट्स एक्चुअली
यहाँ पे अंदरून है बेसिकली, यहाँ पे लोगों ने अपने घरों को गेस्ट हाउसेस बना दिया है। एंड आफ्टर चेकिंग इनटू द होटल हम रात को निकल के रेगिस्तान एक्सप्लोर किया। यार उफ, इतना खूबसूरत है रात को रेगिस्तान, लाइक विद द लाइट्स एंड एवरीथिंग। आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ सीइंग दिस। ये इतने खूबसूरत है, जस्ट लुक एट दैट। एंड सबसे शॉकिंग बात ये है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि उज़्बेकिस्तान में ये सब है। बिफोर हमजा टोल्ड मी कि अगर आपको अफोर्डेबल ट्रिप चाहिए तो उज़्बेकिस्तान आ जाओ। उज़्बेकिस्तान का तो वो भी बताओ ना जो हमने गलती से स्कैम कर दिया था हुकूमत हमने ना रिवर्स स्कैम कर दिया। बेसिकली उसकी 100,000 सॉम एंट्री टिकट है और हम ऐसे चल रहे थे कुछ बच्चों के बीच ना एक छोटा सा गेट बना था साइड से, बच्चों ने खोल के अंदर से वहां से घुस के हम घुस के हमने पूरा एक्सप्लोर किया। हम हैरान, ये इतना खूबसूरत, हम फ्री में कैसे घूम रहे हैं। फिर पता लगा कि हम इलीगली आ गए। एंड आज हमने जल्दी से बाकी सारी यहाँ पे खूबसूरत जगह कवर करनी है। लाइक वी हैव शाही जिंदा, सियाब बाजार है। तो लेट्स गो गाइस। ये देखो, ये है इनका अंदरून और ये कितना साफ है, मतलब एक कचरे का बैग भी आपको नहीं मिलता यहाँ पे। Look at it guys, हमारा मुल्क भी हो सकता है ये, काश। ऑनेस्टली बस मुझे वो शेर याद है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। मॉस्क है, आई थिंक हज़रत खिज़र मॉस्क। लेट्स वाओ। मैं समझ नहीं आ रही थी कि हज़रत खिज़र मॉस्क है या ये इस्लाम करीमोव का मौज़ोलियम है। एंड देन वी रियलाइज कि इसी मस्जिद के अंदर उज़्बेकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट का मौज़ोलियम बनाया गया। सो एट द टॉप इट्स द मौज़ोलियम, एट द बॉटम इज़ द मस्जिद। एंड इन माई ओपिनियन दिस प्लेस इज़ worth visiting. It's very beautiful and इसका architecture is slightly different than the other mosques around here. Top of the day, सियाब बाजार। अब बाजार है गैस, हमारे इतवार बाजार की तरह का। ये चीज़ें तो हमें पूरे उज़्बेकिस्तान में हर जगह नज़र आ रही हैं, लेकिन आई गेस यहाँ पे ज़्यादा अफोर्डेबल होंगी। यार ये चाय है ना, दिस इज टी। कपड़े और बैग्स वगैरह तो बाज़ार में मैंने फ़र्स्ट टाइम खाने की चीज़ें इस तरह देखी। लुक एट ऑल ऑफ दीज फ्रूट्स। ये मेरे पीछे दिस इज़ बीबी खानम्स मॉस्क, लेकिन इसके बिल्कुल सामने एक होटल है जहाँ से आपको इसके डोम की बहुत अच्छी व्यू मिलती है। इट्स दिस वन, ज़ागरान रेस्टोरेंट, एंड दिस इज़ द व्यू दे क्लेम टू हैव। ज़ागरान रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने। How is it? लेकिन it's okay, सही है। बहुत अच्छा। हमने लिया है माँ रोशनी एंड यहाँ की माँ रोशनी इज़ सो गुड। होममेड होती है, आई डोंट नो, इस तरह बेचे होते हैं। 5,000 सोम की या 10,000 सोम की, आप खुद वेट के मुताबिक होती है प्राइस। Lunch के बाद we visited the magnificent Bibi Khanum Mosque. Bibi Khanum was named after Sarai Mulk Khanum, the wife of Timur Lane. लेकिन क्योंकि तिमूर खुद expeditions पे दूर होते थे, it was actually his wife who had it constructed. 15th century में it was planned to be the most biggest mosque, but because it was so big and ambitiously constructed, it deteriorate होने लगा और अपने आप को संभाल ही ना पाया. And then recently it was restored by the USSR and the Uzbek government. Last stop of the day. शाही जिंदा literally means the living king, क्योंकि यहाँ पे it is believed कि हज़रत कुथाम इब्न अब्बास, the cousin of the Prophet Muhammad, peace be upon him, is buried. There are also many graves of the members of the royal families of Uzbekistan. It's actually one of the most beautiful monuments in Samarkand, लेकिन क्योंकि ये छोटी जगह है, it gets very jam-packed, so I would suggest to visit here earlier at sunrise to avoid the crowds. So I just found out that Amir Temur founded the Timurid dynasty, and वहीं से Mughal dynasty was started in India because Babur was exiled from Uzbekistan, so he came to India and founded the Mughal dynasty. This is actually our roots.
रात को we had some affordable food at a local dhaba style restaurant and then we watched a street show by tightrope walkers जिसका apparently बहुत scene है Uzbekistan में and was so fun to watch. And then of course I gave him a handsome tip. देखो ना क्या है वो. Wow. अगले दिन सुबह we left to see the Imam Bukhari tomb. It has a free entry, लेकिन because we took a taxi, so it cost us around 20,000 som, जो कि पाकिस्तानी 500 रुपए बनते हैं, which is pretty affordable for a half an hour ride. गाइस बहुत तेज बारिश होने लगी है, ये देखो. लेकिन यार ये इतना प्यारा लग रहा है. It's really good. Guys, look at the ceiling. Under Russian rule, Russians ने इमाम बुखारी को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की थी because they were against Islam. So they tried to hunt him down. He fled from Bukhara to Samarkand. He was hiding, I think it was at his friend's or his cousin's place. But now after many, many years, people of Uzbekistan have the freedom. They practice their religion freely and इस तरह का वो एक मकबरा बना रहे हैं for our Islamic scholar because during Russian rule, they had destroyed all of the Islamic monuments. For the rest of the day, we attended a traditional non-baking class at a local bakery, which was the highlight of my trip. And then we headed to Registan Square where we got a photo shoot in traditional Uzbek clothes, which cost $150. And honestly, the photographer was not that great. And then to end the day, we visited a Jewish synagogue. One of the oldest and last remaining synagogues in the country. Last day in Tashkent. हाँ. और हमें बिल्कुल दुख नहीं है. इतनी बस हो गई हुई है. मतलब 10 days is too much for Uzbekistan. यहाँ की sweet spot is 8 days. And today we just have one day in Tashkent. And मैंने एक दिन इसलिए रखा because I feel like जो cities होती ना देख देख के आपको सारी एक जैसी लगती हैं. Tashkent is like Islamabad. It's capital and quiet place, nothing to do here. But there is one thing that we have to see, that is Chorsu Bazaar, and also we are going to go there through the metro because their metro is designed with artwork and मुझे वो देखनी. So yeah, spend our last day in Tashkent with us. Guys, हम चल रहे थे and देखो हमें क्या मिला. Blackberries. साग मुझे तोड़ के दो प्लीज, मुझे खाने हैं. अब है वो वाला, ऊपर वाला वो वाला. वो कच्चा है. But then, इतना साफ शहर है ना, ग्रीन ग्रीन. वो तो अलग पेड़ शहर भी आप लोग देखें गाइस. दिस कुड बी पाकिस्तान बट इट्स नॉट. चलते चलते देखो हमें क्या मिला है. ये तो एक पिजन पार्क है. बच्चों को तो देखो कितने क्यूट है. फाइनली हमें मिल गया है इनका मेट्रो, और ये भी मुझे इंतहाई सुकून वाला लग रहा है. अंदर जाओ. इस आर्ट वर्क जिसके लिए मैं आई थी मेट्रो को. इनका शहर इतना एस्थेटिक है, मतलब इनके मेट्रो में भी रियल आर्ट वर्क्स लगे हैं. वाओ. We've just found out that Tashkent city also has history. It's 21 years old. 2200 years. It's 2200 years old. And ये जो आपको दिख रहा है ना, ये artwork, some of them are almost 50 years old. क्योंकि ये सारा बनाया गया था majority Soviet era में. And the Soviets, they made the Tashkent metro. So yeah. You
guys do want to do सस्ती souvenir shopping, so this is the best place. Like the rates here are half of what you will see in other cities. यहाँ पे 25,000 सोम की न्यू शर्ट्स लगी हैं, Just around like 600 rupees. 600 रुपए की न्यू शर्ट्स. इतनी तो आपको सेकंड हैंड में नहीं मिलती पाकिस्तान. We are here. This is the entrance of the famous Chorsu Bazaar. You know कि 2500 साल से this has been a trading hub. मतलब सिल्क रूट पर this was a major stop. So these people, and ये जो आपको बाजार दिख रहा है, सारे लोग चीज़ें बेच रहे हैं, have been here for thousands of years. Wow, आपके साथ गोश्त की खुशबुएं. Chorsu Bazaar is one of the most craziest designed bazaar that I have ever encountered. इसके top floor पर you have the dried items like you have green teas, fruit and flower teas, dried fruits, jellied fruits, sweets and spices. And यहाँ से we took a lot of souvenirs home for our family. Dried apricot. Let's see कि पाकिस्तान से different is. It's different. Like this. Melon. Try one. This one. Oh, melon. Yeah, I had this one. I tried it in this. On the bottom floor, you have the fresh items, homemade items like pickled, cured meats, fresh meats, fats, pastas, cheese, and butter. And because this is Central Asia, we also saw horse meat. And the bazaar doesn't end with the building. आप बाहर निकले तो it spreads on and on with all manner of grocery items like fruits, honey, eggs, vegetables, and उससे बढ़ के you have clothes, accessories, utensils and super affordable souvenir shops जहाँ से मैंने बाकी सारे souvenirs लिए.